Welcome to Future Fest. We'll start with this message that this girl Isba sent me about the new technology. So, can you please play the video? शानी भाई मैं तो तंग आ गई हूँ इन मशीनी आवाज़ों से। अभी तो ये मशीन जनरेटेड चीज़ों का दौर शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। खैर, फ्यूचर फीस्ट 2023 में खुश आमदीद। अभी ये दौर शुरू हुआ ही है, तो बहुत जल्द वो दौर आने वाला है जब रोबोट्स दूसरे रोबोट्स की और टेक्नोलॉजी की खुद से भी कंप्लेंट्स कर रहे होंगे। बिकॉज ये जो वीडियो आपने देखी है, दिस ह्यूमन डजेंट एग्जिस्ट और ये मशीन जनरेटेड वीडियो है। सो इट्स अ रोबोट इन अदर वर्ड्स। सो माय नेम इज शानी फ्रॉम गुड्डू एंड शानी. I am CEO of BTech Digital, and we provide C-level management services as solutions remotely and in person. I am also Chief Brand Officer for Ittihad Textiles in Pakistan. I started my career as a fashion photographer and have produced over 70,000 images in 15 years. I got an opportunity to consult top tier Pakistani fashion brands since we started our career back in 2004. The brands like Sana Safinaz, Nishat Linen, Khadi, and many more. So we worked on building the brands. We also got opportunity to mentor and coach many creative professionals at Gudushani with our company 360 Degrees, and mashallah, all of them are working professionally and earning their life in a very successful manner throughout the industry. These creative professionals include photographers, stylists, textile designers, graphic designers, and all the fraternities. So I'm pursuing my coaching career very soon because that's one of the passions. So it was all about me. मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसलिए कराना ज़रूरी था कि आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल, उसका उससे रिलेटेड मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। मैंने इस प्रेजेंटेशन को कंपाइल करने के लिए अपना ही कुछ काम जो है वो इकट्ठा किया है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम टेक्नोलॉजी के रोल की ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर डेकेड्स एंड स्पेशली इन रिसेंट एरा हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो बैक इन 2000 जब मैंने और मेरी वाइफ गुड्डू ने हमने फोटोग्राफी शुरू की, तो उस टाइम पे बिल्कुल एनालॉग से डिजिटल का एरा शुरू हो रहा था और इस एरा में technology of DSLR, digital DSLR was a very new innovation by in that time, 98 to 2000. जिस टाइम पे हमने काम शुरू किया तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। एक एक अच्छी पिक्चर खींचने के लिए सारा दिन लाइट और मूड और लैंडस्केप की एक टेम्परामेंट का वेट करना पड़ता था टू फाइंड आउट द राइट टाइम टू क्लिक वन सिंगल शॉट। इंडोर स्टूडियोज के अंदर भी जितना भी फोटोग्राफी काम हमने प्रोड्यूस किया, चाहे वो स्ट्रोब लाइट्स के थ्रू हो, चाहे वो HMI लाइट्स के थ्रू हो, इट यूज टू टेक millions of hours to set up one light for a one single good shot. Just for example, if you look at this one image, I used 32 flashlights to produce this one shot. ये सारा दौर जब हमने काम शुरू किया तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इन फॉर्म ऑफ फोटोशॉप एंड पोस्ट प्रोडक्शन इमर्ज करना शुरू की। सो वी वर अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैक इन 2005 we produced this manipulated image after photographing the characters and then manipulating in Photoshop. So Photoshop was the first technology that helped us to conceive, to do the idea, to execute the idea
that we conceived on the curtains of our brain. आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितने आर्टिस्ट हैं, हमारी थोड़ी सी ज़ुबान ज़रा हवाई होती है, तो मे बी जो लोग आर्टिस्ट हैं वो ज़रा रिलेट कर पाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जहन के पर्दे पे एक इमेज बनता है, उसको आपने कैनवस पे उतारना है, उसको आपने फोटोग्राफ करना है, उसको आपने गाने में गाना है, उसको आपने फिल्म में कन्वर्ट करना है. उसमें उस कोर आइडिया को पर्दे पे उतारने के लिए फोटोशॉप वाज द फर्स्ट टूल जो कि हमने इस्तेमाल करना शुरू किया. सो इंस्पिरेशन had always been from history, from classic techniques, just like this image. This was an 18th century photography technique called solarized. So the inspiration was from an old school technique, but Photoshop technology technique helped us even to the basic pictures. If we have taken one picture and there was a certain kind of imaging, there was a certain kind of end result in our mind. So Photoshop always helped us, even with basic pictures, just to convert them into good looking, aesthetically pleasing, desirable images. With the passage of time, 2005 से लेके 2019-20 तक हमारा अपना एस्थेटिक इंटरेस्ट और हमारी थीम्स भी बदलती गई, और somehow technology had been there. So from static image जो कि 2005 में एज ए फोटोग्राफर शुरू किया, उसके बाद 2017 में उन्हीं इमेजेस के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एडवांस होना शुरू हो गई, सो मोशन इमेजेस क्रिएट करना शुरू किए. कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो? सो उसी स्टैटिक इमेज को लेके आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी ने और एडवांसमेंट दी और फास्ट होने शुरू, बिकॉज वी स्पेंट अ वेरी कमर्शियल लाइफ, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैड बीन वर्किंग इन a lot different domains, quite a diverse portfolio, and producing like thousands of images in 15 years was all just because the help of technology. And experimentation again was because the technology was there. There was a lot of imagination. बड़े बड़े अच्छे आइडियाज आते थे. मैं और गुड्डू मेरी वाइफ, हम दिन रात ही, बिकॉज दोनों ही क्रिएटिव हैं, तो हमारी तो बातें भी यही होती हैं कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. सो जैसे कि ये मैंने एक इमेज 2005 में, तारिक अमीन बहुत फेमस स्टाइलिस्ट हैं, उनका एक इमेज प्रोड्यूस किया, एंड आई पेंटेड दिस इन फोटोशॉप, एंड इट टुक मी अराउंड मे बी, अगर मैं गलती नहीं लगी तो 4 से 5 हफ्ते लगे, क्योंकि सुबह भी शूट करना है और रात को फिर ये फोटो मैनिपुलेशन पे काम करना है. बट फोटोशॉप वाज काइंड इनफ. लेकिन जो जो दौर बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती गई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को, और आज एक नया दौर आया. सो मैंने शुरू किया एज ए फैशन फोटोग्राफर, टर्न्ड इनटू अ टीवी कमर्शियल डायरेक्टर, अ ब्रांड कंसल्टेंट, एंड व्हाट नॉट. एंड दीज डेज आई एम यूजिंग अ न्यू टैग फॉर माई सेल्फ. साध्स, I am watching you. So I'm using a new tag for myself, and that is AI artist. That sounds so cool. Artificial intelligent artist. Because there are new technologies through which we can create images through the machine. That's called machine generated art. So मैंने इसी का एक नया वर्जन बनाया कि तारिक अमीन फ्यूचर में कैसा दिखेंगे. इस इमेज ने 4-5 हफ्ते लिए क्रिएट होने के लिए, और इस इमेज ने 4-5 सेकेंड. सो आई जस्ट हैड दिस विजुअल इन माय माइंड कि ओके, तारिक बिकॉज बहुत विजनरी स्टाइलिस्ट, पाकिस्तान के स्टाइलिंग के फाउंडर, एक बहुत बड़ी शख्सियत, वो अगर फ्यूचर में होंगे, 2050 में होंगे, तो कैसा दिखेंगे. सो द मास्क दैट आई गेव हिम इन 2005, द मशीन कन्वर्टेड दैट इनटू दिस. देन आई प्रोड्यूस्ड दिस इमेज इन 2016 with through a classic photography technique which is called light painting, जिसमें बिल्कुल डार्क रूम करते हैं और टॉर्च के साथ स्ट्रोक्स लगाते हैं लाइक अ पेंटर. So this single image almost took a full day
to get the right exposure and the right tone and the right stroke. And the model was also very kind to bear all this. बीच में बड़ा नखरा भी दिखाना उसने शुरू किया कि आप क्या कर रहे हैं यार, ऐसे तो नहीं होती फोटोग्राफी. So I said, यार, bear with me, let's do an experiment. But this image took only 2 seconds. I wrote the same concept, I wrote the transcript, and machine generated this art for me. So, not even photography. अब क्योंकि मैंने अपने आप को AI artist कहना शुरू किया है, not AI photographer. So, I created this painting, which definitely it took me some time to think about the concept and all that stuff. लेकिन मैं जिंदगी में कभी पेंट नहीं कर सकता. मैं जब फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था तो मैंने कभी ज़िंदगी में पेंटिंग नहीं की. मेरी सिस्टर पेंट करती थी, मैं बड़ा उससे इंस्पायर होता था और मुझे कभी पेंट करने का टाइम नहीं मिला और स्किल भी नहीं है मेरे पास. लेकिन वो जो आइडिया था, द बिग आइडिया जो अंदर घुल रहा था, जो जिसको एक्सप्रेस करना था, तस्वीर उसका मीडियम नहीं है, लेकिन AI art helped me to express myself. I created another piece of this. So this painting is called Boot, and it left a very interesting discussion over social media on my Facebook page. उसी डिस्कशन को आज मैंने और कुछ गेस्ट भी बुलाए हैं जिनके साथ हम फर्दर डिस्कस करेंगे उनका पर्सपेक्टिव. मशीन जनरेटेड आर्ट हेल्प क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी हेल्प क्या कर रहा है. टेक्नोलॉजी हर उस कॉन्सेप्ट को आर्टिस्ट के जो उसके जहन में चलता है उसको एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है. आज से चंद साल पहले मैं और गुड्डू थाईलैंड में एक मॉल में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे, तो बैठे बैठे आइडिया आया कि यार कितना मजा आए, एक एनिमेटेड मूवी हो, एक बर्ड जो है ना वो इस मॉल में फंस जाए तो उसकी लाइफ क्या होगी. जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड वी बिल्ट अ होल कॉन्सेप्ट. बैठे बैठे कॉफी के कप के ऊपर बातें कर रहे हैं और यार ये होगा, वो होगा, ये होगा. लेटर ऑन बस वो स्टोरी बच्चों को बताने की हद तक रह गई और कभी हम उसके ऊपर काम नहीं कर सके बिकॉज हमारी डोमेन ही नहीं है. नाउ विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी आई थॉट व्हाई नॉट टू प्रोड्यूस इट. और मैंने उसका पहला मूड बोर्ड बना लिया, उसका स्टोरी बोर्ड डेवलप कर लिया AI जनरेटेड इमेजेस से, जो मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा. सो द स्टोरी वाज, और इसके बाद मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स I will try to produce this machine generated animated film. So right now I just produced a storyboard के वो एक बर्ड है जो कि मॉल के अंदर फंस गया है और वो फिर म्यूजिक की शॉप पे जाता है और वो जाके वहां से हेडफोन्स चोरी कर लेता है. अब दिस स्टोरी वाज समथिंग जो कि बहुत सारी अनरियलिस्टिक स्टोरी थी जिसको फोटोग्राफ में और गुड्डू नहीं कर सकते थे. सो ये सिर्फ 3D में या इलस्ट्रेशन के थ्रू ही बन सकती थी. सो और वो हमारी डोमेन नहीं थी, बट वी प्रोड्यूस दिस. सो वो जाके हेडफोन चोरी कर लेता है और उसी मॉल के अंदर एक बाबा जी आते होते हैं जिनसे उसकी दोस्ती, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ जाता है और फिर क्रिसमस के दिन आ जाते हैं. अब वो क्रिसमस के दिन जब आते हैं तो वो बाबा उसको मिलने नहीं आता. अब बर्ड जो है वो बड़ा परेशान है, वो बाबे को ढूंढ रहा है, उसको आवाजें दे रहा है और उसको फाइनली वो फिर उदासी में म्यूजिक की दुकान पे जाता है और वहां पे वो पकड़ा जाता है. तो जो म्यूजिक हेडफोन उसने चोरी किए होते हैं उसका दुकानदार उसको तारों से बांध देता है, यहां तक कि फाइनली वो मॉल बंद होना होता है क्रिसमस के लिए. तो वो उसको पिंजरे में बंद करके, बाहर बर्फ पड़ रही होती है लेकिन वो फिर भी पिंजरा बाहर रख देता है. एंड फाइनली लकीली वो बाबा जी वहां पे आते हैं और वो उसको पकड़ते हैं, उसको उठाते हैं, उस पर बहुत उनको अफसोस होता है, बड़ा उसको प्यार करते हैं और अपने घर ले जाते हैं. एंड फाइनली दे लिव हैप्पीली. इसके बाद सो ये सारी स्टोरी, ये सारी इमेजिनेशन, ये सिर्फ जहनों के अंदर और कागज के अंदर लिखी पड़ी हुई थी, जिसको एक टेक्नोलॉजी ने एनेबल कर दिया कि मैं विजुअलाइज कर लूं कि मेरी सिनेमेटोग्राफी कैसी होगी, मेरा स्टोरी बोर्ड क्या होगा. मशीन ने ये लाइट क्रिएट की, मैंने डिक्टेट किया कि मुझे लाइट क्या चाहिए, मुझे सिनेमैटिक लेंस कौन सा चाहिए, मुझे फील क्या चाहिए. Even to an extent, I produce these calligraphy pieces inspired from cubism, generated in 1 second. I produced some logo, I tried some user interface, and
What else I could try related to my field, Gudu's field, styling. These are all machine generated styling versions of Pakistani dupatta. How can Pakistani women drape their dupattas in multiple ways? और इस तरह की असाइनमेंट्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने में हमें कई दिन लगते थे प्लान करके और एग्जीक्यूट एंड ऑल दैट स्टफ एंड इट टुक अस 1 second टू प्रोड्यूस these many variants and many more which I don't have here. So future अब क्या है? जो हम सारे लोग आई थिंक जो क्रिएटिव के लोग हैं, फिल्म मेकर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, सारे जो एडोब यूज करते रहे हैं खास तौर पे, whatever you call it, एडोब और एडोबी और एडोबे whatever, so जो फोटोशॉप यूज करते रहे हैं उन सब के लिए एडोब हैज ब्रिंग एन एआई इंजन which is called Sensei. So, आप ये वीडियो डिटेल से एडोब की वेबसाइट पे देख सकते हैं. सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, कंटेंट अवेयर एआई इंजन. आपने एक पार्ट रिमूव करना है, पूरी वीडियो से वो पार्ट ऑटोमेटिकली हर जगह से रिमूव हो जाएगा. सो टेक्नोलॉजी टुडे इज इनक्रेडिबल. इट्स जस्ट एम्पलीफाइंग ह्यूमन क्रिएटिविटी. टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग ना डरना भी शुरू हो जाते हैं और यही हमेशा होता रहा. जब एनालॉग से डिजिटल का दौर आया तो वो कहते थे यार ये असल फोटोग्राफी नहीं होती. जब हमने काम शुरू किया और हमने फोटोशॉप यूज करना शुरू किया तो बिलीव मी अखबारों में आर्टिकल आए कि दे आर गुड फोटोशॉपर. अब फोटोशॉपर क्या टेक्निक होती है ये नहीं समझ आई आज तक, लेकिन दे आर गुड फोटोशॉपर. दे डिडंट यूज द वर्ड गुड फोटोग्राफर. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग थिंग्स सिंपलर और मे बी मोर ब्यूटिफुल. जितना हम एज ए ह्यूमन परसीव करते हैं उससे भी ज्यादा उसकी ब्यूटिफिकेशन को एम्पलीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है. इट्स मेकिंग इट्स बिकमिंग मोर रीचेबल. एवरी किड ओवर हियर हैज अ मोबाइल फोन एंड एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी. इट्स नो मोर के यार गुड्डू शानी जो हो काम कोई नहीं करता. सो इट्स every person is गुड्डू शानी on this earth now. So it's just a will to do it. So for me to be creative means not being bounded by the limits of tools. फोटोशॉप हो जाए, चाहे मैनुअल कैमरा हो जाए, चाहे वो हिस्टोरिक बड़ा सारा कैमरा हो जाए, तो चाहे एआई जनरेटेड टेक्नोलॉजी, मशीन जनरेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए, ये सब टूल्स हैं. आर्टिस्ट इससे बाउंड नहीं होता, बल्कि आर्टिस्ट को इससे इंस्पायर होना चाहिए कि ये उसको अगले स्टेप में ले जाने में क्या हेल्प कर रही है, ताकि आप उस चीज पे फोकस कर सकें जो कि आप की अपना फोर्टे है, जो कि बीइंग क्रिएटिव आपकी क्रिएटिविटी है, जो कि आपकी क्यूरियोसिटी है, जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है एज अ बिजनेस, एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर. सो टेक्नोलॉजी से दोस्ती करना, इन सारे टूल्स से दोस्ती करना है ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर क्रिएटिव प्रोफेशनल बन सकें और ज्यादा बेहतर तरीके से आज की इनोवेशन इकोनॉमी का पार्ट बन सकें. लेकिन माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज दिस इज जस्ट माय पर्सपेक्टिव. ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है
कि हमें ऐसा करना चाहिए या ये टूल्स ऐसा करेंगे और मेरी नज़र में फ्यूचर